Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today, we are going to do our chapter 7, which is Internet and Email. In this chapter, we will be going to learn about a global network, Internet, and electronic mails. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of a chapter is Internet and Email, and the topics which we will discuss in this chapter are understand what the Internet is and how it works, discover how to create and use an email account, learn different ways to connect to the Internet, terms associated with Internet, email, and creating an email account. Now, there is a warm-up activity which says what devices at home connect you to Internet, discuss with the partner. तो आपको ऐसे devices नेम करने हैं जो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो at your home. So it can be a smart TV, smartphone, laptops, printers. So moving forward to the introduction, internet, the short for internet connected network, ये एक gigantic network है that links millions of computers worldwide. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो worldwide millions of computers को connect करता है. It lets us find and share information across this vast connection. Now, what do you नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है? तो इंटरनेट इज होम टू बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बर्स्टिंग विद इंफॉर्मेशन. नाउ हर एक वेबसाइट कंटेन करती है कुछ पेजेस ऑल अबाउट सिमिलर टॉपिक. टू विजिट अ वेबसाइट हम यूज कर सकते हैं उसके यूनिक एड्रेस को कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूआरएल. नाउ टू यूज इंटरनेट हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जब भी हमें इंटरनेट को एक्सप्लोर करना है. फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस इट इज गुड टू हैव वन विद एक्स्ट्रा फीचर जैसे स्पीकर्स या फिर हेडफोन. नाउ टेलीफोन या फिर केबल लाइंस, दीज लाइंस आर पाथवेज जो हमारे कंप्यूटर को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करती है इंफॉर्मेशन. मोडेम ये एक शॉर्ट होता है फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एंड इट इज अ स्पेशल डिवाइस जो हेल्प करता है कंप्यूटर को टू टॉक टू अदर कंप्यूटर्स ओवर टेलीफोन या फिर केबल लाइंस. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है टू ओपन वेबसाइट. कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स एंड ओपरा. आईएसपी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक ऐसी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर को टू एक्सेस द इंटरनेट. कुछ पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज आर बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन एटसेट्रा. जो आईएसपीज होती है ये प्रोवाइड करती है हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे मोडेम या फिर राउटर टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट. टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, फॉलोइंग टेबल हमें शो करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जो कनेक्ट करते हैं हमें टू द इंटरनेट. तो सबसे पहले आता है डायल अप कनेक्शन. ये रिक्वायर करता है फोन टू बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. नो कॉल्स कैन बी मेड या रिसीव्ड व्हाइल द इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड. यहाँ पे जब हम इंटरनेट का यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे कोई भी कॉल्स मेड या रिसीव नहीं करी जा सकती. ब्रॉड कनेक्शन ये यूज करता है वाइड बैंडविड्थ प्रोवाइडिंग हाई इंटरनेट स्पीड. इट इज फास्टर देन डायल अप कनेक्शन. यहाँ पे फोन कॉल्स भी हो सकती हैं, रिसीव हो सकती हैं व्हाइल यूजिंग द कनेक्शन. केबल टीवी कनेक्शन ये प्रोवाइड किया जाता है थ्रू केबल टीवी लाइन एंड इसको यूज किया जाता है, ये यूज करता है केबल मॉडेम जो प्रोवाइड करता है फास्ट इंटरनेट एक्सेस. सैटेलाइट कनेक्शन ये डिश होता है, यहाँ पे हम डिश इंस्टॉल करते हैं टू कनेक्ट टू द सैटेलाइट इन एरियाज जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन की फैसिलिटीज अनअवेलेबल होती है. Then we have digital subscriber line which is DSL. ये टू वायर कॉपर टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं जो एनेबल करता है यूजर्स को टू मेक कॉल्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. The user can access this line by paying a monthly fee to the ISP. वायरलेस कनेक्शन ये ऑफर करता है हाई इंटरनेट स्पीड. ये यूज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमिशन. इट नीड्स अ वाईफाई मोडेम टू बी लिंक्ड टू अ कंप्यूटर एंड यहाँ पे यूजर एक्सेस कर सकता है इसको फ्रॉम एनी लोकेशन हैविंग नेटवर्क कवरेज. मोबाइल इंटरनेट, द यूजर कैन एक्सेस इंटरनेट यूजिंग हिज हर स्मार्टफोन विच हैज नेटवर्क सब्सक्राइब्ड बाय द आईएसपी. ये प्रोवाइड करता है हाई स्पीड वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट. हॉटस्पॉट ये प्रोवाइड करता है वायरलेस एक्सेस to the internet across short distances. It is based on use of Wi-Fi technology and radio waves. यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है इसको एक्सेस किया जा सकता है एट प्लेसेस जैसे यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स एंड होटल्स. टर्म एसोसिएटेड विद इंटरनेट यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स. सबसे पहले वेब पेज. वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो HTML लैंग्वेज में लिखा जाता है.
आप इसको इजीली रीड कर सकते हो ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेबसाइट ये कलेक्शन होता है बहुत सारे वेब पेजेस का, मेड अप ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज आर कॉल्ड वेबसाइट। होम पेज हर वेबसाइट का जो मेन पेज होता है या फिर उसका जो फर्स्ट पेज होता है जो अपीयर होता है जब भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसी को होम पेज बोला जाता है। ये एक डिफॉल्ट वेब पेज है जो लोड कर होता है व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट। नाउ what is a website? So website is a collection of different web pages which are related to each other including text, graphics, videos, etc. URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है और बताता है ब्राउजर को टू डिस्प्ले द सेम पेज। URL आइडेंटिफाई करता है एवरी वेब पेज। सर्च इंजन हेल्प करते हैं हमारी टू सर्च द डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स ऑन www. There are hundreds of different search engines available on the internet. Search engine is accessed through a browser on the computer, smartphone, tablet, etc. Hyperlink ये merely एक portion होता है of a web page जो connect किया जाता है to a URL. Hyperlink can take from the form of text. Hyperlink जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में या फिर नेविगेशनल एलिमेंट जैसे कोई बटन या फिर एरो। आप इस पे क्लिक करोगे तो वो नेविगेट कराएगा फ्रॉम योर करंट पोजीशन टू योर प्रोवाइडेड URL. There is a fun time activity जहाँ पे आपको चार्ट पेपर का यूज करना है, डिजाइन करना है योर ओन वेब पेज अबाउट फेवरेट हॉबी, इंक्लूड द टाइटल, इमेजेस ड्रॉन एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स एक्सप्लेनिंग योर हॉबी। इस शॉर्टकट की न्यू ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+N एंड ओपन अ न्यू टैब इन योर ब्राउजर Ctrl+T। नाउ ईमेल, ईमेल स्टैंड करता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड यूजिंग ईमेल हम क्विकली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, डेटा फाइल्स को शेयर कर सकते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है ईमेल की? ईमेल्स आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल पोस्ट। Email can be sent to larger number of persons at once. Emails can be sent 24 hours a day, 365 days a year. Sending and receiving email बहुत easy है, convenient है, and you can send an email from anywhere. Files of any type can be sent and as an attachment through an email. Without having the type of message again, your an email can be forwarded to everyone. If an email does not reach the recipient on the first attempt, तो मेल सर्वर उसको दोबारा से सेंड करता है ऑटोमेटिकली। ईमेल एड्रेस, एन ईमेल एड्रेस इज नीडेड टू सेंड या फिर रिसीव ईमेल्स। ये जो एड्रेस है ये यूनिक होता है टू इट्स यूजर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ ईमेल एड्रेसेस आर एज अंडर, लाइक दिस एंड दिस। नाउ so the syntax of these email addresses are different based on the type of network. They all have the same basic structure. एक यूजर नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है separated by @ symbol. तो फर्स्ट पार्ट होता है वो शो करता है यूजर का नाम विच इज दिस, एंड सेकेंड पार्ट शो करता है डोमेन नेम या ऑफ द सर्वर होस्टिंग इट, जैसे यहाँ पे डोमेन नेम हो गया gmail.com एंड दोनों पार्ट को सेपरेट कर रहा होता है हमारा @ symbol. ईच यूजर के पास यूनिक यूजर नेम होता है, डोमेन नेम कॉमन हो सकता है यूजर्स का यूजिंग अ पर्टिकुलर सर्वर। और कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऑफर करती हैं फ्री ईमेल सर्विसेज बेस्ड ऑन द इंटरनेट टू मैनेज ईमेल अकाउंट्स एंड सम ऑफ दोज आर gmail.com, yahoo.com, rediffmail.com एंड hotmail.com etc. ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है टू चूज योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, एंड लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ईमेल अकाउंट बाय यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द ट्रेंडी वेबसाइट gmail.com। तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर को टू द इंटरनेट एंड ओपन करेंगे www.gmail.com ऑन योर वेब ब्राउजर। जीमेल का होम पेज अपीयर हो जाएगा, वहां से आप क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट बटन पे एंड क्रिएट योर अकाउंट पेज अपीयर्स। उसके बाद में आपको ये फॉलोइंग चीजें यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन द नेम सेक्शन, योर डिजायर्ड यूजर नेम अंडर यूजर नेम, योर ईमेल एड्रेस will be your username followed by @gmail.com. Now enter your desired password for your Gmail account under the password and then confirm password. Note, एक strong password consist करता है at least 8 characters, combination of letters in both uppercase, lowercase, number and special symbols. Gmail was launched on April 1, 2004. फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है टू वेरीफाई योर फोन नंबर, पेज अपीयर्स and enter your mobile number, click on the next button for verification.
Then on the given mobile number, you will receive a text message from Google with the verification code. आपको verification code enter करना है and then click on verify. Now the next page enters your date of birth, specified fields, choose a gender, click on next button. Now आपको read करना है Google के terms of service and privacy policies and then click on I agree button and congratulations, your account has been created. And from there आप sign in कर सकते हो to your Gmail account using your username and password. इफ यू फॉरगेट योर यूजर नेम या फिर पासवर्ड, देन मोबाइल नंबर जो आपने एंटर करा था वो आपके जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकता है. नाउ उसके बाद में आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी ऑफ द न्यू जीमेल अकाउंट अपीयर्स. फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू जीमेल बटन पे एंड डिफॉल्ट इनबॉक्स स्क्रीन अपीयर्स एंड इट कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस या फिर मेल्स. नाउ साइन इन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना है वेब ब्राउजर आइकन पे. देन in the browser window address bar आप टाइप करोगे gmail.com address and then press enter key. Now click on sign in button at the top right hand of the browser window. Now in the email and phone field आप enter करोगे username of your email address that you have created. Then click on next button. Password field में password enter करोगे. Then click on next button and all your emails are visible in the web browser window. email account के क्या क्या features होते हैं? An email service has various features for users जैसे inbox ये डिस्प्ले करता है वो received emails, हर एक मैसेज हेडर डिस्प्ले करता है to whom you send the email and the subject line, time, date email was sent. You can click on any email to view its content और ये स्टोर करता है all the incoming emails. कंपोज ये अलाउ करता है आपको टू राइट न्यू ईमेल मैसेज. सेंड इस फोल्डर के अंदर ये वो ईमेल स्टोर करता है जो आपने लोगों को सेंड करी है. ड्राफ्ट ये स्टोर करता है अनसेंड मैसेजेस यानी कि ऐसी मेल्स जो आपकी रेडी थी बट आपने अभी किसी को वो भेजी नहीं है बट आपने सेव करके रख रखी है और आप उनको शायद लेटर ऑन एडिट करोगे. कैटेगरीज इफ यू वांट टू फिल्टर मैसेजेस इनटू स्पेसिफिक टैब तो आप कैटेगरी फीचर का यूज कर सकते हो. जीमेल आपको बिल्ट इन कैटेगरी देता है टू ऑर्गेनाइज योर इनबॉक्स बेटर एंड ये जो कैटेगरीज है ये इंक्लूड करती है प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस, फोरम्स एंड अपडेट. देन यहाँ पे जो आपकी डिलीटेड ईमेल्स होती हैं वो ट्रैश में रहती हैं फॉर 30 days एंड आफ्टर दैट इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड. कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल. सो टू राइट एन ईमेल आपको क्लिक करना है कंपोज बटन पे. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन न्यू मैसेज बॉक्स अपीयर होगा. देन इट विल ओपन अ न्यू विंडो विद द फॉलोइंग कंपोनेंट. टू इन दिस सेक्शन आप टाइप करोगे पर्सन का ईमेल एड्रेस टू whom you want to send the email. Then CC stands for carbon copy. In this field, one can specify addresses to whom one want to send the copy of the email. Now जो email address mentioned है in the field वो visible होगा to all the recipients of the mail. BCC stands for blind carbon copy. ये include करता है copy of email to several people. But यहाँ पे जो email address है वो mentioned होगा इन द फील्ड्स आर नॉट विजिबल. वो विजिबल नहीं होगा रेसिपिएंट्स को ऑफ द ईमेल. सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है इन दिस फील्ड एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की आपने जो मेल लिखी है वो किस बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है, आइडिया अबाउट. मैसेज टाइप द मैसेज इन द मैसेज बॉक्स एंड यू कैन फॉर्मेट इट यूजिंग अवेलेबल फीचर्स. आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल आप क्लिक करोगे सेंड बटन पे एंड द ईमेल विल बी सेंड टू द रेसिपिएंट. नाउ अटैचिंग फाइल्स टू एन ईमेल. दैट मीन्स आप जो ईमेल सेंड कर रहे हो उसमें आप कोई अटैचमेंट लगानी है तो आप क्या करोगे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को भेज सकते हो जैसे इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर फाइल्स अलोंग विद योर मेल. तो उसके लिए आपको क्लिक करना है अटैच फाइल आइकन पे. इज दिस. देन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. ब्राउज करना है, सिलेक्ट करना है फाइल को जो आप अटैच करना चाहते हो. उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक कर दोगे और वो फाइल आपके मेल पे अटैच हो जाएगी. एंड देन क्लिक ऑन सेंड बटन टू सेंड द मेल विद अटैचमेंट. रीडिंग एन ईमेल. नाउ क्लिक करना है आपको ईमेल पे फ्रॉम अ फ्रेंड अलाउज यू टू व्यू इट. नंबर आएगा इन फ्रंट ऑफ द इंडेक्स बट इनबॉक्स जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ अनरीड ईमेल मैसेजेस इन योर अकाउंट. अनरीड मैसेजेस हाईलाइट हो जाते हैं इन बोल्ड. देन टू व्यू एन ईमेल आपको क्लिक करना है सेंडर के नेम पे और द सब्जेक्ट लाइन एंड द नेम एंड आइकन बिलो द टॉपिक इंडिकेट दैट द ईमेल कंटेन्स एन अटैचमेंट. और रिप्लाई करना है आपको किसी मेल पे तो आप रिप्लाई कर सकते हो अपनी रिसीव्ड मेल पे. वो इंक्लूड करता है ओरिजिनल मैसेज को. देयरफॉर बोथ ओरिजिनल मैसेज एज वेल एज इट्स रिप्लाई विल बी विजिबल टू द रेसिपिएंट. एंड टू रिप्लाई एन ईमेल आपको क्लिक करना है रिप्लाई बटन पे. टाइप करना है टेक्स्ट इन द मैसेज
box and click on send button. फॉरवर्ड करना है कोई ईमेल, यानी कि आपको एक कॉपी सेंड करनी है ऑफ अ रिसीव्ड ईमेल टू अनदर पर्सन बाय फॉरवर्डिंग इट। तो फॉरवर्ड करने के लिए आप ओपन करोगे अपने ईमेल मैसेज को दैट यू वांट टू फॉरवर्ड, तो क्लिक करना है थ्री डॉट्स पे, ऑन द अपर राइट कॉर्नर एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां से आप फॉरवर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हो एंड एंटर करना है ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको आप भेजना चाहते हो एंड देन क्लिक ऑन सेंड बटन। साइनिंग आउट ईमेल अकाउंट, यानी कि अपने ईमेल अकाउंट से आपको बाहर आना है, साइन आउट करना है। तो यू शुड ऑलवेज क्लोज योर ईमेल अकाउंट जब आपका टास्क ओवर हो जाता है एंड द टर्म फॉर दिस इज साइनिंग आउट। इट इज इसेंशियल टू साइन आउट ऑफ योर अकाउंट सो दैट कोई भी आपके मेल्स को या आपके अनवांटेड ईमेल्स को सेंड एक्सेस नहीं कर सके फ्रॉम योर अकाउंट। फिर आप क्लिक करोगे प्रोफाइल आइकन पे एंड इट इज अ सर्कल दैट इज द टॉप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, जब आप इस सर्कल पे क्लिक करोगे वहां से आपको क्लिक करना है साइन आउट ऑप्शन। Let's revise the chapter. Internet is a giant network of computers around the world. You need a computer, internet connection, and web browser to use the internet. Email lets you send messages and files to other electronically. Email address consists करता है दो parts, username and domain name that are separated by @ symbol. Recipients marked in BCC are not shown to other recipients of the email. Important to close your email account properly by signing out. Let's do the exercise. First is tick the correct option. What does ISP stands for? Internet Service Provider. Web browser lets you view website. What symbol is in every email address? Which is an example of a search engine? Now to visit a website, you need is web address. Let's do fill in the blanks. Home page is the first page you see on a website. You can send pictures and videos as email attachment. Your emails dash should be kept secret. Password. Dash is a wireless way to connect to the internet. Hotspot. Dash lets you learn about different places in the world. Internet. Let's do answer the following in one word. Name a popular web browser. Google Chrome. What do you call unwanted emails? Spam. What does Wi-Fi stands for? Wireless facility. Button on a web page that takes you to another place. Hyperlink. Where do deleted emails go? Let's do true false. Internet works without computers. False. You can only send text in an email. False. Search engines help you find things on the internet. True. It's safe to share your mail password with friends. False. And websites can have games and videos. True. So students, this was your complete chapter about internet and email. I hope the chapter is clear to you. Do revise your chapter once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.